फोकस कर लेते हैं टाटा स्टील के नंबर्स पर, और नंबर्स अगर हम देख रहे हैं तो बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स है. नंबर्स हैव एक्चुअली कम इन क्वाइट वेल. Q4 FY23 consolidated year on year basis पर हम देख रहे हैं revenue is down 9%, EBITDA is down 52%, margins have come in at 11.46. Now मैं ये बता दूं, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इससे खराब थी, तो क्लियरली यहाँ पर बीट किया है एक्सपेक्टेशंस को. नाउ क्विकली नेट डेट की बात भी करें. नेट डेट हैज एक्चुअली गॉन डाउन 3900 करोड़ रुपीस से नीचे गया है एट 67,810 करोड़. चलते हैं अब सीधे टॉप मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हैं, नंबर्स और बेहतर समझेंगे. मिस्टर टीवी नरेंद्रन, एमडी एंड सीईओ एट टाटा स्टील, हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं. सर बहुत बहुत स्वागत है. ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू. पहले तो जो नंबर्स आए हैं व्हिच हैव बीटन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स, हम कैसे इनको डिफाइन करेंगे, और जो परफॉर्मेंस देखी है इस बार, उसका मेन और मुख्य कारण क्या रहा? थैंक्स स्वति इनवाइटिंग मी ऑन द शो. एक्चुअली आप देखिए तो दिसंबर में चाइना में कोविड का जो रिस्ट्रिक्शंस था, दे रिमूव्ड इट. दैट चेंज द सेंटिमेंट इन द स्टील मार्केट्स ग्लोबली एंड इन चाइना. तो उसका असर हम लोग जरूर देखा है, एंड आई थिंक स्टील प्राइसेस वेंट अप ड्यूरिंग द क्वार्टर. दैट हैज सर्टेनली हेल्प्ड. दूसरा बात यह है कि हम लोग का वॉल्यूम्स जो देखिए तो लास्ट क्वार्टर वाज हायर देन द क्वार्टर बिफोर दैट. So we had an advantage of that as well. So we had more volumes, I think about 400,000 tons more volumes in Q4 than we did in Q3. And third is the coal prices, which had been going up, gas prices, electricity prices, all started settling. So we got the benefit of that as well. So overall, margin expansion happened, volume expansion happened. And because sentiment changed, the offtake in the market was larger than the underlying demand. So that's why we had a strong quarter. Okay, going forward, sir, क्या आपको improvement in realizations दिखते हैं for Q1 FY24 and overall FY24 year? कैसा लग रहा है from the trends that you're seeing at this point in time? तो अभी देखिए तो Q1 का जरूर the realizations of Q1 we expect will be about 1,200 rupees better than Q4. But हम लोग का coal consumption cost भी ज्यादा होगा Q1 में, क्योंकि जो हम लोग अभी जो कोयला कंज्यूम कर रहे हैं, that is what we bought 2-3 months back. So the benefit of the dropping coal prices, which has happened in the last maybe 1 month, उसका फायदा आएगा Q2 में. Overall sentiment आप देखिए तो China, you know, the sentiment on China was very strong after it opened up. Now it is mellowing a bit. So thoda some moderation hai. I think people are expecting that yes, China will do well, but may not be as well as they thought 3 months back. So that's why we are seeing steel prices in China have dropped a bit, coal prices have also dropped, etc. But I do believe that at a very fundamental level, China will grow. I mean, all forecasts are that China will grow at 5 to 6%, which is very big for a country of that size, economy of that size. China also exported almost 8 million tons of steel in March. I expect that also to moderate going forward to come back to 5-6 million ton level. So I think FY24, if I leave out Q1 of FY23, because Q1 was a very unusual quarter last year. If I leave out Q1 and if I look at Q2, Q3, Q4, FY24 should be better than FY23. Okay, तो indications are positive going forward, sir. Europe operations, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वहाँ पर EBITDA पर टन में लॉस देखा गया है. क्या आपको ये सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूके गवर्नमेंट से, क्या स्ट्रैटेजी होगी अब यूरोप ऑपरेशंस को लेकर? वुड यू डाइवेस्ट नाउ? तो अब देखिए तो यूरोप में हम लोग का 2 एसेट्स है. एक है नेदरलैंड्स का एसेट, दैट इज नॉर्मली अ स्ट्रांग एसेट एंड डजंट नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. तो अभी जो हो रहा है उधर, इट इज मोर टू डू विद द फैक्ट दैट वी हैव अ ब्लास्ट फर्नेस रीलाइनिंग. वन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेसेस, वी हैव 2 ब्लास्ट फर्नेसेस देयर. So one of the blast furnaces has been shut down for relining, and it will come back only in August. So this quarter we will see that, and over the last 6 months or 8 months we have also built stocks, slab stocks, which is why the working capital was also higher there. So I expect from Q2, towards the end of Q2 and Q3, Netherlands will come back to track, which is normally a strong business which can take care of itself. UK में जो है, UK yes is challenging. The EBITDA losses in UK we expect it to reduce going forward. It was on the higher side for Q3 and Q4. We expect it to be still an EBITDA loss, but less of a loss in Q1 and Q2. But UK, हम लोग का larger challenge ये है कि many of the assets are coming to the end of life. So unless you put in money, those assets can't survive. And the business does not generate the cash flows to support that kind of investment. And that's why we have proposed to the government that if they support us, then we can transition to a new asset base, a new process route.
But as of now, the support given by the government or offered by the government is nowhere close to what we think we need to make the transition. Okay, तो अभी उनसे dialogue चल ही रहा है. There's no concrete finalization on that. हाँ जी. Sure. सर नेट डेट पर मैं बात करना चाहूंगी. वहां पर रिडक्शन हुआ है ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपए का. क्या गाइडेंस होगा FY24? क्लियरली स्ट्रीट इज रिकग्नाइजिंग कि कंपनी ने अपना डेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा आपने पहले कमिट भी किया था, कम करते जा रहे हैं. सो इम्पोर्टेंट सर टू नो एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि क्या गाइडेंस होगी आगे नेट डेट को लेकर. तो ये साल में हम लोग का टारगेट इज टू रिड्यूस बाय अनदर $1 billion in FY24. And I think we should be on track for that because अब देखिए तो last year a lot of money got stuck in working capital when coal prices went up from $250 to $650. So we are seeing an unwinding of cash from working capital. We have also built up almost 700,000-800,000 tons of stocks, slab stocks. That will also get used up over the next 3-4 months. Margins are improving, volumes are strong, and of course we will continue to spend on capex, particularly in India. And despite that, we expect हम लोग का debt हम लोग at least $1 billion में कम. Okay, wonderful. Quickly, sir, timeline for mega merger of all the metal companies, sir, वो भी एक है चीज जो स्ट्रीट पर समय से जानना चाह रही है. उसका क्या टाइमलाइन है फाइनल कंप्लीशन का? So we depend totally on the courts and the NCLT etc. तो उम्मीद है कि ये साल में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे. Already it's progressing. I mean, we have multiple schemes which have been submitted. They're all at different stages of progress. उम्मीद है कि ये साल के अंदर हम लोग पूरा ये merger कंप्लीट कर सकते. ओके सर, डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड, स्टील डिमांड पर क्या व्यू रख रहे हैं और प्राइसेस स्पेशली, क्योंकि Q4 में HRC प्राइसेस रिकवर हुए नियरली 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने 12% फॉल देखा. तो प्राइसेस आगे किस तरह से लग रहे हैं, ट्रेंड्स एंड डिमांड फॉर डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन? So demand fundamentals are strong because देखिए तो for me lead indicators are commercial vehicle sales is very strong. If you look at industrial buildings, pre-engineered buildings, etc., still very strong. Rural economy was a bit soft, but I'm seeing if you look at motorcycle sales, it has started picking up over the last quarter compared to the previous quarter. Construction is quite strong. The order book is good. There's a little bit of sentiment which goes up and down depending on international prices. So जब sentiment थोड़ा down hai, then people postpone purchases, saying that if we wait longer, we'll get better steel prices. So I think there's a little bit of that going on in the market. But otherwise, fundamental demand, I think, is strong. If the GDP grows at 6%, I expect steel consumption to grow at least 7-8%. ओके, स्टील कंजम्पशन 7 से 8% ग्रो करने की बात है आगे. क्विकली और आखिरी सवाल सर, NINL का जो आपने एक्विजिशन किया और उसके बाद दिस हैज एडेड अ बिग चंक इन योर ओवरऑल कैपेसिटी. तो साल के अंत तक क्या कैपेसिटी हम आपके कंपनी की तरफ से देखेंगे? कुछ और एडिशन होने की बात है सर? ओवरऑल एनी मोर एसेट्स दैट यू वुड बी लुकिंग आउट फॉर? नो, अभी जो फोकस रहेगा टू रन NINL full out. Already we are running the blast furnace at full capacity. It is producing, last month it produced 90,000 tons. So we are at that 1 million rate that we said we will reach within the year. उन लोग का जो प्लांट था 3 साल से बंद था, but we have got everything, most of it started. Sinter plant, oxygen plant, blast furnace, steel mill shop. What is left, major asset which is left, is the coke ovens, which will come back in Q2, क्योंकि उससे नीलाचल का cost और कम हो जाएगा. Iron ore mines are operating. We are feeding Nilachal with iron ore from the iron ore mine. So overall, it's been a good operational turnaround. The financials will keep improving as the volumes go up and the costs comes down. And Nilachal will operate at the rated capacity of more than 1 million tons during the year. Just now, we are not looking at any other assets. We want to make sure that we get the most out of Nilachal and also complete the Kalinganagar expansion, because that will add another 5 million tons over the next 2 years to our capacity. Already udhar ka pellet plant, cold rolling will all have started. The other assets will also start in the next 12 to 14 months. ओके, ऑल राइट. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके का आगे बिजनेस को लेकर अपडेट है. धन्यवाद.